Afghanistan has just made one of its biggest investment pitches to India, offering free or concessional industrial land, 1% import duties, 5-year tax holiday for Indian industry. Hello friends and welcome to Borders and Beyond. So today we are going to talk about what is Afghanistan offering to India. Let's start with the facts. Afghanistan Commerce Minister Mr. Niruddin Azizi just visited India very recently and laid out a very aggressive, very strategic investment package. Here is what Afghanistan is offering Indian businesses: free or concessional industrial land, only 1% import duty on machinery and raw materials, 5-year tax holiday for new industries, fast track clearances for Indian company, sector specific investments and incentives in mining, agriculture, textile, pharma, IT, energy and health services. A requirement that minerals like gold must be processed inside Afghanistan, meaning industries need to be built on the Afghan soil. This is not for individuals. This is not free land for common people. This is a targeted push to attract Indian industrial and capital. Now, the essential thing is that what Afghanistan government and the Taliban government want कि आप अफगानिस्तान आए, फैक्ट्रीज लगाएं, प्रोसेस करें एग्रो इंडस्ट्रीज, माइनिंग, ऑपरेशन, आईटी पार्क्स, और हम ये आपको जमीन, आपको ये टैक्स ब्रेक, इंसेंटिव्स बहुत सस्ते दामों में देंगे. ना सवाल ये उठता है, अफगानिस्तान ये कर रहा है तो क्यों कर रहा है? Why is Afghanistan and the Taliban government making this extraordinary offer to India? काफी सारे कारण है. One of the reasons is last पिछले 50 साल से वो वॉर में है, decades of war. There is zero formal banking access, global sanctions, frozen foreign reserves, no global financing, कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स नहीं. इस समय अफगानिस्तान और तालिबान गवर्नमेंट को अपने कंट्री की सिचुएशन इंप्रूव करनी है. अगर वो चाहता है दाइश, आईसिस वहां ना आए, तो वहां स्टेबिलिटी चाहिए. स्टेबिलिटी आती है पैसे से. अफगानिस्तान नीड्स जॉब्स, industry, technology and stability. And historically, India is the only country that Afghanistan trusts the most. और मैंने पिछले वीडियो में बोला था और बात की थी दी पठान एंड दी अफगान वे ऑफ लाइफ. अफगानी ना अपने दुश्मनों को भूलते और ना उनको भूलते जिन्होंने उनकी हेल्प की. और पिछले 20 सालों में व्हाट हैज इंडिया डन? इंडिया हैज बिल्ट द अफगान पार्लियामेंट. India has built hospitals, dams, transmission lines, schools. India has trained Afghan civil servant officers and doctors. अफगानिस्तान के जो सिटीजन्स हैं हर साल हजारों लाखों की तादाद पे इंडिया आते हैं, पर्टिकुलरली न्यू दिल्ली, टू गेट ट्रीटेड इन सम ऑफ द फाइनेस्ट इंडियन हॉस्पिटल्स. Afghanis remember all of this, and this is one of the reasons why Afghan leadership is reaching out specifically to the Indian investors. Now let's talk about the positive side and the strategic upside for India. Indian businesses के लिए फायदा क्या है? Especially infrastructure and construction company that not just India, they are now also going to be involved in the nation building, economy building opportunity. अफगानिस्तान पूरा बर्बाद हुआ है पिछले 50 साल की लड़ाई से. पहले सोवियत आया, देन अफगान अमेरिका आया, वॉर ऑन टेरर. अफगानिस्तान नीड्स रोड्स, Afghanistan needs bridges, industrial parks, housing, healthcare infrastructure. Basically, Afghanistan को सब कुछ चाहिए. Indian companies know exactly how to build in difficult terrains. Unlike other companies, इंडिया में लद्दाख है, इंडिया में वहां
कंपनीज को मालूम है वहां कैसे काम करना है. सो दिस इज अ मैसिव एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी फॉर इंडियन इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फर्म्स. For India's energy and mining sector, Afghanistan offers untapped deposits. बहुत सारा अवेलेबल है वहां पे डिपॉजिट ऑफ गोल्ड, कॉपर, iron, rare earth, lithium, and much more. If India can get long-term access to the resources, it would reduce dependency on China. और जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, नाउ लेट्स लुक एट द अदर साइड ऑफ द कॉइन. अफगानिस्तान इज नॉट लाइक वियतनाम और यूएई कि वहां पे कंपनीज जाएंगी, चुपचाप काम करेंगी, नेशन बिल्डिंग में इन्वॉल्व होंगी, वापस हो जाएंगी. Afghanistan is one of the most unpredictable countries in the world, and some of the risks are no stable government. Governments in Afghanistan have changed violently. There is no long term guarantee. And probably the most important point is the Pakistan factor. Afghanistan being a landlocked country and Pakistan, ISI, deep state of Pakistan, has always considered Afghanistan as their backyard. So it wants full influence over Kabul's decision, and it will do anything to ensure Afghanistan never closely aligns with India. And a stable Indian friendly Afghanistan is one of the biggest Pakistan's nightmare. And the third point is proximity to Iran. अफगानिस्तान का जैसे पाकिस्तान से बॉर्डर मिलता है वैसे ही ईरान से मिलता है. ईरान since 1979 onwards is a pariah state. अमेरिका, इजराइल काफी टाइम से Iran has never given up its quest for nuclear weapons and the missiles to deliver them. ईरान में regime change operations कर रहे हैं. एंड अगर आपके बॉर्डर्स वॉलेटाइल हो, अगर आपके बॉर्डर एरियाज में प्रॉब्लम होती है, it will have problems and difficulties in your own backyard. So this creates a high voltage geopolitical triangle where every move is going to be hypersensitive. And the fourth point is US sanctions. No major bank wants to touch Afghanistan. Cross border payments, insurance कौन करेगा, and basic financing will become nightmare. And now comes the last and probably the second most important point is security. Pakistan will never see India doing anything progressive there. So India cannot send thousands of workers into a conflict zone unless there is an ironclad security guarantee, which Afghanistan probably is not in the position to give at this point of time. तो सवाल ये उठता है, इज दिस अ ट्रैप? दिस इज अ $1 million क्वेश्चन. क्या अफगानिस्तान जेन्युइनली चाहता है, तालिबान गवर्नमेंट जेन्युइनली चाहती है कि उसका कंट्री में इंप्रूवमेंट हो, रीबिल्ड हो, या तालिबान ये चाहता है कि एक स्ट्रैटेजिक ट्रैप हो जाए कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान और उसके बीच में इंडिया भी आ जाए? नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड pros and cons of both. Now, the pro is this could be a genuine opportunity. Afghanistan desperately needs development. They trust India. ईरान पे वो ट्रस्ट नहीं कर सकते, पाकिस्तान पे नहीं वो ट्रस्ट कर सकते. इंडिया they definitely trust a bit. They need industries, jobs, food security, mining expertise, and healthcare. India has already proven its goodwill by building the parliament, dams, hospitals, जिसकी बात मैंने शुरुआत में की. So yes, this can be a genuine mutual and a beneficial partnership. Now the con is this can also be a geopolitical trap. Think of this scenario. India starts investing heavily in Afghanistan. लोग जाते हैं, infrastructure projects में काम होता है. Suddenly Pakistan backed टेरर ग्रुप्स स्टार्ट डिस्टेबलाइजिंग द रिलेशंस. ईरान में टेंशंस फिर से शुरू होंगी. यूएस वापस पिक्चर में आएगा. बागराम एयरबेस की बात आपको मालूम है. सैंक्शंस टाइटन होंगी. एंड इफ इंडिया इज ट्रैप्ड इन अ कॉन्फ्लिक्ट जोन वेयर एवरी राइवल पावर इज प्लेइंग चेस, जो हमारे लोग हैं उनका क्या होगा? हाउ आर दे गोइंग टू बी मूव्ड आउट ऑफ दैट कंट्री? And it is, like I said in the past, it is not in Pakistan's interest to let India gain any economic or strategic foothold in Afghanistan. And Pakistan has had a long track record
of sabotaging any India-Afghan cooperation relationships. So if India accepts the offer, it changes the regional equation. If India rejects the offer, चाइना पाकिस्तान नेक्सस जो कि ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है अफगानिस्तान में वो भरने लग जाएगा. इफ इंडिया एंगेजेस केयरफुली विद लिमिटेड पायलट प्रोजेक्ट्स, it can maximize the upsides and minimize the risk. So what do you think we should do? Should we start small or should we be investing heavily? Because in geopolitics, opportunities and traps often look very, very similar. Thank you for watching. Jai Hind.